Good morning, everybody. I'm Nancy Singh from class 10th A, and today's my presentation topic is respiratory system. As you can see here, first of all, we should know what is respiratory system. Many of us knows that inhaling of oxygen and exhaling of CO2 is known as respiration. Yeah, it is correct, but it is not a proper definition to explain someone. The proper definition of respiratory system is the process of acquiring food from outside the body and to use it in the process of breakdown of food source for cellular needs is known as respiration. The process of acquiring oxygen means inhaling oxygen from the outside, from the environment, and the process of acquiring oxygen from the outside to our body and use it in the process of breakdowns of food and use it in the formation of energy is known as respiration. Then it is a biochemical process taking place in the mitochondria of the cell and involves exchange of gaseous like oxygen and carbon dioxide and oxidation of food in the cells of release energy. It is a biochemical process that takes place in the mitochondria. First of all, we should know what is mitochondria. Mitochondria is a membrane bound cell. It is also known as a powerhouse of cell. The exchange of gases it involved in the mitochondria and uh, involves gases like oxygen and carbon dioxide and oxidation of a food in the cells to release energy. Oxidation is a biochemical process in which the gaseous substance is exchanged. Then to explore respiratory system, we should know what is the structure of a respiration and what are the process or parts that involves in a respiration. So first of all, nasal cavity. The respiration is a start from our nose. First of all, nasal cavity. Nasal cavity is a space inside our nose. जो हमारे नोज के अंदर स्पेस होता है उसको हम नेजल कैविटी कहते हैं. Next is nostrils. The two holes by which we inhale oxygen or air is known as nostrils. Next is pharynx. It is a muscular tubes in the middle of a neck. In the middle of the neck that involves in the middle of a neck that involves in a respiration is known as pharynx. Next is larynx. It is a voice box. Next is trachea. Trachea is also known as a windpipe. Trachea is a U-shaped structure. Trachea is a U-shaped structure that involves in a respiration. Next is bronchi. The bronchi is a smaller tube-like structure that connects to the trachea. Next is bronchioles. Bronchioles is directly connected to bronchs, or we can also say that bronchioles is a parts of a bronchs. Next is alveoli. Alveoli is a pouch-shaped structure that connected to the bronchi and bronchioles. Uh, in a respiratory system, whole exchange of gases is involved in a alveoli. Next is diaphragm, the chest cavity. The partition that separates the chest cavity and abdominal cavity is known as diaphragm. Now, uh, now let's see the process of respiratory system. First of all, when we inhale uh, oxygen respiration is a start from the nose. When we inhale oxygen, जब हम एयर इनहेल करते हैं तो वो हमारे नोज से होते हुए नॉस्ट्रल तक जाता है. नॉस्ट्रल को नेसल पैसेज भी कहते हैं. नेसल पैसेज पर म्यूकस और नेसल हेयर्स प्रेजेंट होते हैं. जो हम एयर इनहेल करते हैं तो ये नेसल हेयर्स जो हैं वो एयर में प्रेजेंट डस्ट और इम्प्योरिटीज को ट्रैप करते हैं, जिसके वजह से हमारे बॉडी में और लंग्स तक सिर्फ प्योर एयर ही जाए. उसके बाद फिर जो प्योर एयर होते हैं वो हमारे ट्रैकिया से होते हुए लंग्स में जाते हैं. लंग्स से होते हुए ब्रोंकी और जो सारे प्योर एयर्स होते हैं वो डायरेक्टली एल्वियोली में फील हो जाते हैं. उसके बाद फिर
एल्वियोली में फील होने के बाद एल्वियोली में ऑक्सीजन एल्वियोली थिन ब्लड वेसल से कनेक्टेड होता है और ऑक्सीजन एल्वियोली में प्रेजेंट ऑक्सीजन ब्लड में प्रेजेंट हीमोग्लोबिन के साथ रिएक्ट होता है, तो इसका साइड प्रोडक्ट CO2 बनता है और इसका साइड प्रोडक्ट CO2 बनता है। उसके बाद फिर जो ब्लड होता है वो सारे ब्लड सारे पार्ट में बॉडी के सारे पार्ट में ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है। उसके बाद फिर जो इसका साइड प्रोडक्ट CO2 निकलता है वो एल्वियोली से बाहर होते हुए ब्रोंकियोल से होते हुए ट्रैकिया से हमारे नोज से बाहर चला जाता है। तो ये हो गया हमारा एक्सलेशन ऑफ एयर। उसके बाद यहाँ पास जब हमारा एयर ब्रोंकी से ब्रोंकियल्स और एल्वियोली में प्रेजेंट होता है तो फिर एल्वियोली से होते हुए एयर ब्रोंकी और एल्वियोली और ट्रैकिया से होते हुए जो CO2 साइड प्रोडक्ट बना था वो आउट हो जाता है। उसके बाद many of us knows that energy is produced from the digestive system, but no, digestive system is only used for breakdown of complex food into a smaller food. Energy is produced from respiratory system, not from digestive system. Thank you. Hope you liked the video.